Hello and welcome. Welcome to learning session number 7 of chapter number 3, which is Life Processes in Living Organisms Part 2. So far in this learning session, what all have we seen? We have seen introduction, we have seen asexual reproduction in unicellular organisms, and then we had seen asexual reproduction in multicellular organisms. Then we had also seen sexual reproduction in plants. Uske andar we had seen parts of flower, because flower is the functional unit of sexual reproduction in plants. Then we had seen pollination, then we had seen fertilization, then double fertilization, and lastly we had seen germination. All of these are part of sexual reproduction in plants. Okay. In the last learning session, we had begun sexual reproduction in human beings. Under that, we had seen human female reproductive system and human male reproductive system. We're going to continue that topic today also. Okay. So sexual reproduction in human beings, the topics we want to cover today are gamete formation. What is gamete? Gamete is basically your male and female reproductive cells coming together to form zygote, and that process is known as fertilization. So how is fertilization happening in human beings? That is also something we're going to discuss today. Okay. So these are the words we are learning today: puberty, copulation, implanted, cervix, contract, and degeneration. Okay, these are the words we'll learn meanings of in this learning session. So before we actually start moving ahead with today's learning session key objectives or the topics we're going to learn today, I just wanted to quickly revise, and a good way to revise was by giving you practice questions. Okay, so this is one practice question. Describe the female reproductive system. We have already seen the female reproductive system in detail in the last learning session. So how do we write answer? Write the answer if the question is describe the female reproductive system. We generally 4 marks का ये question आ सकता है. Okay, if it's a 4 mark question, this is the length of answer which is expected. Okay, so first what they have done, लोग ने कौन से अलग अलग पार्ट्स है वो बता दिए. Okay, it consists of vagina, uterus, oviduct and ovaries. ये 4 मेन पार्ट्स है फीमेल ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के. नेक्स्ट, हर एक पार्ट को वो लोग ने एक टाइटल की तरह लिखा है, एंड दे हैव डिस्क्राइब दैट पर्टिकुलर पार्ट, उसका फंक्शन, mainly its function has been described. Okay, so first vagina. So it is a muscular tube, it's here, right? So एक muscle से बना हुआ tube है. It provides the route for menstrual blood to leave the body during menstruation. Now we haven't studied this topic at all. This topic most probably we'll learn in the next learning session, but just know that under the function of vagina, this is one of the functions of it. Okay, and that we're going to learn about it in detail in the next learning session. Okay, that what's the function? It is the route यानी जहां से जाने वाला है what menstrual blood during a process called as menstruation. Okay, next, it acts as a pathway for entrance of sperms into the female body. So for fertilization, male and female gametes have to come together, right? So the male reproductive cell, which is the sperm, is going to enter female body through vagina. Okay, that's another function of this part. And then next is uterus. Uterus, again, it's a muscular organ. Here it's just above the vagina. Next, it can accommodate growing fetus and contracts to push the baby during labor. Okay, so first है B point में दो चीजें बताइए. First चीज है कि it can accommodate fetus, यानी if the baby is being born inside the body of a female, it is going to be inside uterus. Okay, so उसको accommodate कर सकता है, अंदर रख सकता है. And it contracts to push the baby during labor. So when during childbirth, ये contract होने वाला यानी shrink होने वाला है. जब shrink होगा, then it is going to be pushed below, right? And then when it's pushed below, the baby is going to come out of the female body. So that's why it's that's another important function of this part. Okay, accommodate growing fetus, वो जो baby grow हो रहा है उसको अंदर रखना, and to push the baby during labor. Labor yani basically childbirth. Okay. Next, oviducts. So it is the passage which connects uterus to ovary. So this is oviduct, right? Ye tube hai oviduct. So it is a passage which is connecting uterus and ovaries. Okay. Last, ovaries. So ovaries are two oval shaped organs. यहाँ पे एक ओवल शेप्ड ऑर्गन है एंड यहाँ पे एक ओवल शेप्ड ऑर्गन है इन द अपर राइट एंड अपर लेफ्ट साइड्स ऑफ यूटरस. इफ दिस इज द यूटरस, upper right and upper left sides of uterus. Okay,
they develop and release eggs. उनका काम ही वो है. Okay, so they're going to release eggs, which is a female reproductive cell. Next, ovaries secrete estrogen, which brings about changes in girls during puberty. And now, what is puberty? All should know what puberty is. So, puberty is the age when human body gets mature and is ready for reproduction. Okay, so only at from one particular age is the human body ready for reproduction. They can't start reproducing when their body is not mature yet. Okay, so just point पे वो maturity आएगी human body की, so that they can start reproducing, make new organisms. That is what we call as puberty. And puberty, generally there are many things which change in human body during puberty. For example, I would say boys का आवाज बदलने लग जाता है during puberty. Okay, so that is one example. Many bodily changes happen during puberty. Okay, so that's the function of ovaries. So again, this is a very good summary of the human female reproductive system. So make sure you are copying this and by hearting this answer. Next, it was very easy to guess. If we have studied the female reproductive system in the previous question, the next question is going to be about male reproductive system. Okay, same thing they have done. They have first given you a list of all the organs or parts of the organ, and finally they have given the functions of each and every organ. Okay, so what does it consist of? It consists of testes, which is here. Next, epididymis, which are here just above the testes. Next is vas deferens, which is this long tube. Seminal vesicles, which is over here. Give me a minute. I think my face is here. Yeah, seminal vesicles, which is this blue color part, and lastly Cooper's gland and penis. Okay, so Cooper's gland is here, very nearby the urinogenital duct and penis. Okay, so now coming to the functions of each and every one of them. So testes produce sperm. So sperms are the male reproductive cell. So female reproductive cell था ovary में बन रहा है, right? Now male reproductive cell is being produced in testes of male reproductive system. Okay, they secrete hormone testosterone, which brings about changes in boys during puberty. Female में क्या था? Estrogen था. Okay, whereas यहाँ पे testosterone है. What is estrogen and testosterone? These are basically hormones. Hormones क्या होते हैं? Chemicals होते हैं जो हमारे body में changes ला सकते हैं. So ड्यूरिंग प्यूबर्टी मेल्स में टेस्टोस्टेरोन की वजह से वो चेंजेस आने वाले हैं, एंड ड्यूरिंग प्यूबर्टी इन फीमेल्स एस्ट्रोजन की वजह से वो चेंजेस आने वाले हैं. ओके, देन एपिडिडेमिस. सो स्पर्म्स आर स्टोर्ड एंड मैच्योर्ड इन द एपिडिडेमिस. सो यहाँ पे जो स्पर्म्स प्रोड्यूस हो रहे हैं टेस्टिस में, दे आर गोइंग टू बी स्टोर्ड इन द एपिडिडेमिस. ओके, नेक्स्ट वास डिफरेंस. It is a passage through which the sperms travel towards urethra. Okay, so if once they are matured here in the epididymis, if they want to travel, they'll have to travel from this long tube, right? So ये long tube का नाम है vas deferens. Okay, next seminal vesicles, prostate gland, Cooper's gland, ये सब क्या है? ये basically ऐसे organs है जो एक कोई ना कोई केमिकल सिक्रीट करने वाले. ओके, सो इनका काम क्या है? सिक्रीशन यानी प्रोड्यूस करके रिलीज कर देना ऑफ दीज ग्लैंड्स. सिक्रीशंस ऑफ दीज ग्लैंड्स, ये लोग जो कुछ भी केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, कॉन्स्टिट्यूट द सेमिनल प्लाज्मा. ओके, सो बेसिकली सीमन जो बनने वाला है, सीमन में देयर आर ऑल दीज liquids secreted by these all organs plus sperms. Okay, so sperms आने से पहले जो बच जाता है, that is called as seminal plasma. उसमें sperms भी add हो गए, then you will say it is semen. Okay, so these are very important to produce semen. And last point is penis. So semen is ejaculated out through the penis. So they have to enter the female body, right? Female body में जाके वो vagina से uterus में जाके वहां पे it is going to combine with the female reproductive cell, which is the egg, right? So it has to go out of the male body, and that is going to happen through penis. Okay, so again it's a very good summary of the male reproductive system. So make sure you are copying this answer and by hearting this answer, and you need not copy the diagrams again. Okay, so even in the previous question here, need not copy the diagram. Here also need not copy the diagram, only write the answer because you'll have already copied the diagram once. Okay, next
Give me a minute. Okay. Sexual reproduction in humans, gamete formation. Now we are starting to discuss gamete formation. So both gametes, which is sperm, which is the male reproductive cell, and ovum, which is the female reproductive cell, they are formed by meiosis. Okay, दो ही options होते हैं, या तो mitosis होता है या meiosis होता है. जो कुछ भी reproduction से related होगा, generally meiosis से regenerate होगा. और कुछ भी बहुत ज्यादा नंबर में डिविजन करना है, बहुत ज्यादा ग्रोथ होनी चाहिए, तब माइटोसिस से होगा. दैट्स द जनरल रूल ऑफ थंब. रिप्रोडक्शन का सारा सेल डिवीजन मियोसिस से, रिप्रोडक्शन से जो रिलेटेड नहीं है वो माइटोसिस से. ओके. Sperms are produced in testes. We have already seen that in the previous answer of men from beginning of puberty till death. कब प्रोड्यूस होगा? At as soon as we are born, will the testes start producing sperms? The answer is no. At the age of 4, 5, 6, it is not going to produce sperms. Okay. Only when our body is mature yani it can now reproduce, तभी it will start producing sperms. और वो mature है कि नहीं कब पता चलेगा? During puberty. Okay. So जैसे puberty start होगा, at the beginning of puberty testes में sperms बनना शुरू हो जाएगा. और ये कब तक बनते रहेंगे? Till death. Okay. So even if you're 100 years old, males sperms are going to be produced in the testes of men till death. Okay, even at the age of 100. But that's not the case that's not the case with women. Okay. However, in case of women, women at the time of birth, there are 2 to 4 million. 2 to 4 million. 1 million यानी 10 लाख होता है. Okay. So ये basically 20 से 40 लाख. So 20 से 40 lakh immature oocytes in the ovary. Okay, so as soon as a female is born, female human is born, at the time of birth, जैसे birth हुआ है, there will be 20 to 40 lakhs of immature oocytes. Okay, oocytes क्या we had seen in the last learning session. Oocytes में से ही ovum बनने वाला है. We have seen ovum over here, right? So female reproductive cell है, तो ovum किससे बनेगा? oocyte से बनेगा. So 20 से 40 lakh oocytes already present during birth. Okay, and oocyte matures and is released from ovary every month from the beginning of puberty. ये तो सेम है, स्टार्टिंग पॉइंट सेम है. Males में भी reproductive cell will start forming from the beginning of puberty. Females में भी the oocyte will start maturing and releasing every month from beginning of puberty. तो starting point same है, but this is not till there. This is up to the age of menopause, which is approximately 45 years of age. What is menopause? We'll see in the next slide. Okay, but एक particular limit है. Humans, males में sperms are going to be produced till death, whereas in females it is only approximately till 45 years of age, जिसको menopause बोलते हैं. Okay, so what is this menopause? So menopause is the stoppage of functioning of female reproductive system. So females का जो reproductive system है वो function करना बंद हो जाएगा. That is called as menopause. Okay, और वो generally 45 years of age के आसपास आ जाता है. Okay, at the age of about 45 to 50 years, secretion of hormones controlling the functions of female reproductive system either stops or becomes irregular. क्या रुक रहा है या फिर irregular हो रहा है? सिक्रीशन ऑफ हार्मोन. सिक्रीशन का मतलब हमने देखा है, राइट? सिक्रीशन मतलब प्रोड्यूस होकर रिलीज हो जाना. हार्मोन्स आर केमिकल्स व्हिच आर कंट्रोलिंग बॉडी फंक्शंस. कौन से फंक्शंस? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंक्शंस. सो ऐसे केमिकल्स जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के केमिकल्स, ऐसे फंक्शंस, सॉरी, ऐसे केमिकल्स जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंक्शंस को कैरी आउट करता है, वो या तो रुक जाएगा, आइदर स्टॉप और बिकम इरेगुलर. कभी सिक्रीट होंगे, कभी सिक्रीट नहीं होंगे, कभी काम करेंगे, कभी काम नहीं करेंगे. तो इसी की वजह से मेनोपॉज हैपेंस. ओके, so again I can see a question being formed here. Why does menopause take place in female human reproductive system? And these 2 points should be your answer. It could be asked for 1 mark. Okay, next, fertilization. Okay, so formation of zygote by union of sperm and ovum is called as fertilization. This we have seen so many times, we have discussed so many times. Sperm is the male reproductive cell, ovum is the female reproductive cell. दोनों जब union मतलब क्या? unite होंगे, साथ में आ जाएंगे, that is called as fertilization. And when male and female reproductive cells come together, they form zygote. Okay, next, fertilization is internal in humans. Internal मतलब it is happening inside our bodies. Okay, it is going to happen inside, इसलिए उसको internal बोला. Semen is ejaculated in vagina during copulation. So what's the pronunciation? CO, co,
PU, PU, LA, lay, TION, shun. Okay, copulation. So copulation. So semen is what? Semen is all those वो जो glands थे human male reproductive cells में plus the sperms जो testes में बने हैं वो सबका एक liquid is semen. Okay, that is ejaculated. What is the meaning of ejaculated? Ejaculated यानी it is released. Okay, it is thrown out of the body in vagina. Here is the vagina, and vagina is the part of female reproductive system. Okay, so copulation, what's the meaning of the word copulation? Is basically sexual intercourse. During sexual intercourse, the semen inside male reproductive system is going to be ejaculated inside the female reproductive system through the penis. Okay, next, sperms in the number of few millions. Okay, again more than tens of lakhs. Sperms start their journey by the route of vagina, uterus, oviduct. Okay, so the sperms are going to first enter vagina, then they are going to enter the uterus, and then they are going to enter the oviduct. Okay, and oviduct में क्या है? One of those few million sperms fertilize the. I'm waiting for that black thing to go away. Fertilize the only ovum present in oviduct. Okay, so यहाँ पे oviduct में every month one oocyte is going to be released, right? So यहाँ पे एक ही oocyte होगा. So वो जो million, there are a few million sperms, right? उसमें से कोई भी एक sperm को जाके उस एक जो वहां पे oocyte है उसको fertilize करना है. Okay, and this is the diagram of that happening. This is the egg cell, and you can see those white things are sperms which are trying to fertilize that egg cell. Okay, next, from the age of puberty up to menopause, which is puberty generally starts from 10 age of 10 to it could start from age of 10 to 17. 10 to 17 mein puberty is going to take place. What is puberty again? It's your body becoming mature for sexual reproduction. Okay, so from 10 to 7 years, which is puberty, to the age of 40 to 45 to 50 years, which is menopause, an ovum is released every month from ovary. Okay, ये भी हमने काफी डिटेल में देख लिया ऑलरेडी. एवरी मंथ एक बार लेफ्ट साइड के ओविडक्ट में एक ओवरी रिलीज हो सॉरी ओविडक्ट में एक ओवम रिलीज हो जाएगा, फिर बाद में नेक्स्ट मंथ राइट साइड के ओविडक्ट में एक ओवम रिलीज हो जाएगा और ऐसे ऑल्टरनेट करते रहेगा. ओके, so that is out of 2 to 4 million ova. So मैंने क्या बोला था, in females at the time of birth there are approximately 20 to 40 lakh ova. ova क्या है? ovum का plural form. Okay, for example, mobile is singular, mobiles is plural. Similarly, ovum is singular, ova is plural. या फिर radius is singular, radii is plural. Okay, वैसे ही. So already 20 to 40 lakh ova है, उसमें से only one ovum is released every month. तो अप्रोक्सीमेटली जो 20 से 40 लाख ओवा है उसमें से सिर्फ 400 रिलीज होने वाले. ओके, ड्यूरिंग द एंटायर लाइफ टाइम ऑफ अ फीमेल. ओके, सो सिर्फ 400 रिलीज होने वाले वो 20 से 40 लाख ओवम में से. सो जो बाकी के ओसाइट्स है उसका क्या हो रहा है? ओके, सो द रिमेनिंग ओसाइट्स अंडरगो डीजनरेशन. डीजनरेशन यानी वो खराब होने वाले, दे गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड. ओके, सो इन दिस slide what they are saying is at the time of birth of a female there are many oocytes in the female body, but उसमें से सिर्फ 400 रिलीज होने वाले हैं from puberty to menopause. बाकी के जो कुछ भी वो सब degenerate होने वाले यानी destroy हो जाने वाले. Okay, next, again there is a very interesting thing given in a box in your textbooks. Okay, so oocytes released from ovaries during last few months nearing the age of menopause, which is 40 to 50 years old. So अगर समझो a female is around 40 to 50 years of age, so it is very near menopause, right? अभी कभी भी menopause हो सकता है. एक बार menopause हो गया then the release of ovum is going to stop. So जब ये age होता है 40 to 50 years of age, the ability of division has been diminished till now. Okay, diminished यानी छोटा हो जाना, कम हो जाना. किसका क्या कम हो रहा है? एबिलिटी टू डिवीजन, डिवाइड होने की जो क्षमता है वो कम होने वाली है. ओके, एंड डिवीजन इज इंपॉर्टेंट, राइट? मियोसिस से वो डिवाइड होने वाला है. बट अगर डिवीजन का एबिलिटी कम हो गया उससे क्या होने वाला है? दे कैन नॉट कंप्लीट मियोटिक डिवीजन प्रॉपरली. मियोटिक डिवीजन अच्छे से नहीं होगा क्योंकि डिवीजन का एबिलिटी अभी इतना अच्छा नहीं है. ओके, बिकॉज ऑफ द ओल्ड एज 40 to 50 years. इफ सच oocytes आर फर्टिलाइज, समझो अभी ये oocytes एट द एज ऑफ 40 या 50 फर्टिलाइज हो गए और
मियोसिस अच्छे से नहीं हो सकता, तो द न्यू बॉर्न्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम देम मे बी विद सम एबनॉर्मेलिटीज लाइक डाउन सिंड्रोम. व्हाट इज डाउन सिंड्रोम? इट्स अ हेरिडिटरी डिजीज, राइट, जो हम लोग ने देखा है इन 9th स्टैंडर्ड. ओके, इन द चैप्टर हेरिडिटी आई थिंक वी हैड सीन डाउन सिंड्रोम क्या होता है. सो इसके चांसेस बढ़ जाते हैं. व्हाई? बिकॉज वो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा उसका डिवीजन करने का एबिलिटी बहुत कम हो गया होगा इस एज पे. एंड दैट्स व्हाई एबनॉर्मेलिटीज मतलब क्या? नॉर्मल का उल्टा, नॉर्मल का ऑपोजिट इज एबनॉर्मल. सो एबनॉर्मल बर्थ होने के चांसेस काफी इंक्रीज हो जाते हैं. ओके, दैट्स व्हाई इट इज नॉट एडवाइजेबल फॉर females to get pregnant at the age of 40 to 50. Okay, next, again, there's a very interesting box given in your textbook. I'm not going to read this entire thing out, but here there's, I think, again, this small box, within this box we had already discussed in 9th standard. So female reproductive cell के पास वो जो सेल होगा उसके न्यूक्लियस में there will be 22 ऑटोसोम्स and one sex chromosome. टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. पेयर्स मतलब क्या? डबल डबल होंगे. ओके, डबल डबल यानी डिप्लॉइड. डिप्लॉइड का मतलब भी वो है ना, दो सेट ऑफ सेल्स होंगे. हैप्लॉइड में एक सेट ऑफ सेल्स होगा. ओके, सो 22 ऑटोसोम्स होंगे, 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स और एक पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम. तो इस फीमेल के पास सिर्फ एक्स टाइप का होता है, वेयरएज मेल के पास या तो एक्स टाइप का हो सकता है या तो वाई टाइप का हो सकता है. ओके, तो समझो ये एक्स और एक्स दोनों साथ में आ गए, तो एक्स एक्स इज अ गर्ल चाइल्ड. और समझो यहाँ मेल के पास वाई था, सो वाई एंड एक्स विल come together and they will get a male child. Okay, so the newborn baby is either a girl or a boy. It depends on not on the female, क्योंकि फीमेल के पास तो सिर्फ x है. It will depend on the male, क्योंकि मेल के पास या तो x हो सकते हैं या तो y हो सकता है. Okay, so again if you see यहाँ पे दोनों है ना, x भी है y भी है, but after it is going to get separated, या तो x fertilize होगा या तो y fertilize होगा. So depending on that, your the sex of the newborn baby is determined. Okay, so based on this, okay, based on this there is a question which I'll ask at the end. Okay, so we are going to continue with our topic, which is the next in line is पहले gametes form हो गए, then fertilization हो गया. What about development and birth of a new individual? Okay, so zygote formed after fertilization in oviduct. Oviduct के अंदर sperms is going to fertilize the egg cell and एक zygote is going to form. So this zygote will undergo repeated mitotic division. पहले क्या हो रहा था? meiosis हो रहा था, अभी mitosis होगा. So it is going to undergo mitotic division and embryo is going to form. So zygote से हमेशा embryo form होता है. That is also very common across different reproductive systems. So embryo form हो गया. Meanwhile it is pushed towards uterus. So ये सब कहाँ पे हो रहा है? ओविडक्ट में हो रहा है. So ओविडक्ट में से ये पुश होने वाला है यूटरस के अंदर. ओके, इट इज इम्प्लांटेड. इम्प्लांटेड का मतलब क्या है? इम्प्लांटेड यानी वो जो ट्रैक है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का उसको चिपक जाना. ओके, दैट इज नोन एज इम्प्लांटेड. वहीं पे एकदम स्टिक हो गया. सो यूटरस में जाके इट इज गोइंग टू बी इम्प्लांटेड एंड फर्दर डेवलपमेंट अकर्स आफ्टर इम्प्लांटमेंट. ओके, सो एम्ब्रियो जो एक बार स्टिक हो गया, इम्प्लांट हो गया यूटरस में, वो आगे फिर बाद में डेवलप होने वाला है. An organ called placenta, okay, placenta is formed for supply of food material. For example, sexual reproduction in plants में there was endosperm, right? Endosperm का काम था वो food provide करना for the zygote. Whereas यहाँ पे क्या है? placenta है. So placenta is going to supply food and food material for the growth in uterus. किसका growth? zygote, sorry, embryo का growth. Okay. Next, embryonic development is completed approximately within 9 months after fertilization. तो एक बार fertilization हो गया, उसके बाद approximately 9th months के बाद ये जो embryo का development है, और जो embryo form हो गया पूरा का पूरा develop होने में approximately 9 months लगने वाले हैं. Okay, so there are some can you tell type of questions. Okay, both of them are very good and interesting questions. Also, if you notice, इसमें से बहुत सारी चीजें अभी कोरोना पैंडेमिक की वजह से they have been cancelled from your textbook. Even then I'm discussing them. The reason I'm discussing them is it is very important for you to understand and get the concept very clear in your mind. अगर मैं ये सब discuss नहीं करूंगा, there will be conceptual problems in your understanding. So जो कुछ भी कट किया है तुम्हारे सिलेबस से for grade 10
बोर्ड एग्जाम, यू डोंट बाय हार्ट इट, बट उसको समझना इंपॉर्टेंट है. ओके, so let us see the answers. So question number 1 was, which hormone is released from pituitary, uh, I think this is gland. Okay, यहाँ पे एक word missing है, gland, pituitary gland of mother once the fetal development is completed. Fetal मतलब क्या? वो बेबी बनने से पहले जो छोटू सा जाइगोट डेवलप हो रहा है उसको बोलते हैं फीटस. ओके, सो पिट्यूटरी ग्लैंड में से जो प्रेग्नेंट वुमन है उसके फीटल डेवलपमेंट complete. Okay, let me read this question again. Okay, which hormone is released from the pituitary gland of mother once the fetal development is completed? एक बार fetus completely develop हो गया तो कौन सा hormone release होने वाला है pituitary gland में से? The answer is oxytocin. Okay, it's a one word answer. Oxytocin again is the name of a hormone जो release होने वाला है. कब release होगा? जब वो embryo completely develop हो चुका है. Okay, next question. Under the effect of that hormone, कौन सा hormone? Oxytocin. Okay. Which organ of the female reproductive system starts to contract and thereby birth process, which is parturition? Okay, how do you pronounce this? PAR is part, TU is to, RI is re, TION is shun. Okay, parturition. Parturition. Okay, so birth process का एक दूसरा नाम है parturition, is facilitated. So ये जो हार्मोन है इस हार्मोन की वजह से कौन सा वो ऑर्गन है जो कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है. ओके, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या? कॉन्ट्रैक्ट यानी श्रिंक होने वाला है एंड देयर बाय बर्थ का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा. सो बेसिकली यूट्रस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा. यूट्रस मतलब यूट्रस वी हैव सीन इन द डायग्राम, राइट? लेट मी टेक दैट डायग्राम आउट. यस, दिस इज द यूट्रस. सो ये कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा एंड यहीं पे हमारा जाइगोट इम्प्लांट भी हुआ था. तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट होने शुरू हो जाएगा तब इट इज गोइंग टू बी पुश्ड डाउनवर्ड्स. ओके, सो contraction of uterus is stimulated, which helps to dilate the cervix. Now what is cervix? Cervix is basically the lower part of uterus. Okay, जो नीचे वाला पार्ट होगा यूटरस का, that is called as cervix. तो वो dilate होगा. dilate मतलब contract का उल्टा. dilate यानी वो expand हो जाएगा because the baby has to come out from that passage, right? So उसको expand होना पड़ेगा. So uterus is going to contract यानी shrink होने वाला है और नीचे का जो पार्ट है cervix, that is going to get expanded. Okay, so that the baby can now come out. Again, how do you pronounce cervix? CER is sir, VIX is cervix. Okay, and I haven't color coded this, but again this could be a little difficult to pronounce. So OXY is oxy. Okay, OXY is oxy, TO is to, CIN is sin, oxytocin. Okay, so ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से यूटरस कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, सर्विक्स डायलेट होने वाला है ड्यूरिंग पार्टुलेशन. ओके, और पार्टुलेशन का मतलब क्या है? पार्टुलेशन इज बेसिकली बर्थ का प्रोसेस. ओके, अ न्यू ऑर्गेनिज्म इज गोइंग टू टेक बर्थ इन दिस न्यू वर्ल्ड ऑफ अस. ओके, अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग बॉक्स विच इज वेरी थॉट प्रोवोकिंग. सो यहाँ पे हम लोग ने पढ़ा था राइट इन द प्रीवियस स्लाइड. यहाँ पे द मेल रिप्रोडक्टिव सेल कैन आइदर हैव एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम, और वो एक्स क्रोमोसोम फर्टिलाइज कर रहा है या वाई क्रोमोसोम फर्टिलाइज कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि गर्ल चाइल्ड होने वाला है या बॉय चाइल्ड होने वाला है. ओके, सो उसके ऊपर इज इट करेक्ट फॉर अस टू कंसिडर द मदर रिस्पॉन्सिबल फॉर a girl child? Okay, if you all have if you are paying attention around our society, firstly whenever there's a birth taking place, always preference है कि लड़का होना चाहिए नहीं, male should be born. And the reason is, I mean, it's partly economic because वो जो लड़की है वो शादी करके दूसरे घर में जाने वाली है. It's they are not going to get monetary support, whereas जो लड़का है वो शादी के बाद एक लड़की को अपने घर में लाएगा, फिर देन दे कैन स्टार्ट अ फैमिली, वो फैमिली का नाम आगे बढ़ा सकते हैं, एंड he can also earn and give it to his parents, right? So there are many reasons why they prefer a male child. Okay, so बहुत बार क्या होता है, couples when they go undergo, so when the couples when the couples have a baby, जब उनका बेबी होता है, they always prefer boy child, और बहुत बार ऐसा क्या होता है कि गर्ल चाइल्ड आ जाता है, एंड whenever that happens the family is unhappy about it, एंड जब भी ऐसा होगा मदर को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है. अच्छा कि
इसके बॉडी में कुछ तो प्रॉब्लम है, इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कुछ तो प्रॉब्लम है, इसके वजह से बार बार गर्ल चाइल्ड बॉर्न हो रही है, विच इज नॉट ट्रू। फीमेल का कुछ लेना देना ही नहीं होता है वो जो बेबी है उसके जेंडर से। व्हाई? बिकॉज फीमेल के पास सिर्फ एक्स क्रोमोसोम है, वेराज मेल के पास या तो एक्स हो सकता है या तो वाई क्रोमोसोम हो सकता है, राइट? और वो मेल का जो रिप्रोडक्टिव सेल का क्रोमोसोम है वो ही डिसाइड करेगा कि गर्ल चाइल्ड होने वाला है या मेल चाइल्ड होने वाला है। सो इट डिपेंड्स ऑन द बॉय कंप्लीटली। सो इट्स वेरी रॉन्ग टू से दैट वो जो लड़की है, वो जो मदर है, उसकी वजह से ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। And we should take all efforts, यहाँ पे last line if you see, we should take all efforts to stop female feticide. Okay, so what is female feticide? So जैसे ही उनको पता चल जाता है, वो लोग कुछ टेस्ट करते हैं और वो टेस्ट से पता चल जाता है कि वो जो बेबी है, जो जाइगोट फॉर्म हो रहा है पेट में इन द फीमेल प्रेग्नेंट लेडीज बॉडी, दैट्स अ मेल चाइल्ड और अ फीमेल चाइल्ड। so जैसे ही पता चलता है वो फीमेल चाइल्ड है तो उसको एबॉर्ट कर देते हैं, उसको पेट के अंदर ही मार देते हैं। ओके, सो दैट इज नोन एज फीमेल फीटिसाइड, विच इज अगेन इलीगल इन इंडिया बाय द वे। ऐसा करना इंडिया में इलीगल है एंड इट्स वेरी रॉन्ग। एंड बहुत बार लड़कियों को दोष दिया जाता है, वेयर प्रॉब्लम लड़कों में है, बिकॉज उनके क्रोमोसोम में एक्स या वाई हो सकता है, एंड दैट्स व्हाई इट्स सो इम्पोर्टेंट। ओके, आई रिमेंबर लास्ट लर्निंग सेशन के स्टार्टिंग में मैंने बोला था that many of these discussions can be very uncomfortable. We are talking about our private parts, and I had told you that it's important for us to communicate about this. भी जो एक्स क्रोमोसोम है, वाई क्रोमोसोम्स है, अभी तुम लोग को जब इसके बारे में पता चल जाएगा, नाउ यू कैन टॉक अबाउट इट वेरी कॉन्फिडेंटली एंड साइंटिफिकली। तुम लोग के पास रीजंस है, जब भी तुम लोग बोलो कि नहीं इसमें माँ की कोई गलती नहीं होती, इसमें मेल जो है उसकी गलती होती है। Why? Because I have learned science, and that is the importance of learning everything about our entire body. Okay, and that's the benefit we get. Okay, so again, even in the previous slide here, I haven't read the entire thing. I'm trusting y'all to read it. Okay, y'all can go in the textbook or y'all can pause the video right here and read this entire thing. I'm not going to explain this. Similarly for this one, I'm not reading the entire thing or explaining. I am just giving y'all that responsibility to pause the video here and read this entire box and just check if y'all are understanding everything. और यही सबसे important part है इस chapter का। So जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, उसके एक पार्ट को क्या बोलते हैं, दूसरे पार्ट को क्या बोलते हैं, कितने रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसके वजह से जो कुछ भी होता है उससे फर्क पड़ता है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, आई वुड से। ओके, and let's end with a few practice questions. So first, gender of child is determined by male partner of the couple. So जैसे एक कपल का बेबी हो रहा है, उसका जो बेबी का जेंडर है वो मेल पार्टनर से डिसाइड होगा। इज दैट ट्रू और फॉल्स? अगर तुम लोग जरा भी ध्यान दे देते, you would know that that is true, because मेल के पास या तो एक्स हो सकता है या तो वाई हो सकता है, फीमेल के पास सिर्फ वाई, सॉरी फीमेल के पास सिर्फ एक्स सेक्स क्रोमोसोम होता है। ओके, सो द आंसर इज ऑब्वियसली ट्रू। देन दे हैव आस्क्ड यू टू एक्सप्लेन विद रीजंस why this statement is true or false. तो तुम लोग को रीजन क्या देना है, ये जो मैंने पिछले स्लाइड में तुम लोग को एक्सप्लेन किया, उसी को तुम लोग को you'll have to put in point wise, or can take the help of this paragraph also to frame a good answer for this question. तुम लोग को एक्सप्लेन करना है कि तुम्हें एक्सप्लेन करना है कि मेल पार्टनर की वजह से बेबी का सेक्स क्यों डिटरमाइन होता है। ओके, अनदर एक्सप्लेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ओके, सो हम लोग डिस्कस क्या कर रहे हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और मैंने क्वेश्चन किसका डाला है, प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। सो द रीजन इज, मैंने लास्ट टाइम जब प्लांट का रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये क्वेश्चन डाल देना चाहिए था, बट आई फॉरगॉट टू पुट दिस क्वेश्चन देयर, सो बेटर लेट देन नेवर। सो आई वुड आस्क यू ऑल टू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स अगेन इज अ वेरी लॉन्ग आंसर। ओके, सो ये 4-5 मार्क का क्वेश्चन पूछेंगे। सो इसमें डायग्राम होना चाहिए फ्लावर का, बिकॉज फ्लावर इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो पार्ट्स ऑफ फ्लावर तुम लोग को बताना है। देन दोस 4 steps, first is pollination, then fertilization, then double fertilization and germination. ये सारे points अच्छे से point wise लिखने हैं for as your answer for this question. Okay, so again I am trusting you all to practice writing the answer to this question. Okay, so that's it for this learning session. The new words that we have learned today, first is puberty. So puberty is the period during which humans reach sexual maturity. सेक्सुअल मैच्योरिटी यानी वी आर केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाती है बॉडी। कॉपुलेशन इज बेसिकली सेक्स। इम्प्लांटेड मतलब वो जो फर्टिलाइज एग होता है या फिर जो जाइगोट फॉर्म होने वाला है वो स्टिक हो रहा है
सरफेस ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो यूरेटर में होता है ना, सॉरी यूटरस में होता है, राइट। यूटरस के का जो ट्रैक्ट है, वो जो पाइप जैसा ट्यूब है, उसके अंदर वो चिपक जाएगा, दैट इज नोन एज बीइंग इम्प्लांटेड। सर्विक्स यानी यूटरस का लोअर पार्ट, कॉन्ट्रैक्ट यानी श्रिंक, डीजेनरेट यानी डिस्ट्रॉय। ओके, so that's it for this learning session. I hope you all understood this learning session, and I'll see you all in the next learning session. Till then, peace and bye.